Bharatvarsh, a country that has evolved over thousands of years with confluence of cultures from around the world. This evening, I shall take you through the story of the evolution of one of the oldest civilizations of the world, India, through the ages. 3,000 years before Christ, the cities of Harappa and Mohenjo-daro were the heart of the Indus Valley civilization, which dates back to the Bronze Age. The fertile valley of River Indus not only helped the settlement to grow, but also evolve with advanced urban planning and technological prowess in trade, agriculture, and medicine. Following its decline around the 4th century BC, Chandragupta Maurya, a common man aided by India's pioneer economist Chanakya, established the Mauryan Empire. The empire reached its zenith with his grandson, Emperor Ashoka, a fearless warrior who turned into an ambassador of peace. He embraced Buddhism and spread it across Asia. The Mauryas boasted of centralized administration, military strength, economic prosperity, and the renowned Nalanda University, a hub of education in ancient times. Ashoka's legacy is embedded in India's national symbols till today. शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए Centuries after the decline of the Mauryan kingdom, various dynasties ruled India, advancing economics, mathematics, science, and medicine. During the medieval period, two most courageous indigenous dynasties, the Maratha Empire and the Rajputana Confederacy, courageously fought the Mughals. The Marathas, under the leadership of the national hero Chhatrapati Shivaji Maharaj, played a significant role in defending Mughal invasions and maintaining Indian rule. Shivaji Maharaj established a progressive civil rule and a structured administration, making the Maratha Empire one of the 6 golden periods of Indian history. The Rajputs, known for their gallantry and bravery, ruled numerous princely states. They had mighty women warriors skilled in the art of warfare. The king of Mewar, Maharana Pratap, was one of the brave Rajputs who defended his kingdom from the Mughal invasion. The era of the Marathas and Rajputs saw the construction of many castles and palaces in western India, which continue to uphold the glory of that period till today.
हंस पर दो मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। During the early 14th century, Emperor Babur from Central Asia invaded India and established the Mughal Empire, which ruled India for another 400 years. This invasion not only changed the political scenario, but also had an enormous impact on the culture of India. The influence of Mughals brought significant changes in clothing, music, cuisines, and architecture. The longest reigning Mughal was Emperor Akbar, who had married a Hindu Rajput princess. He had won the trust of Indians by way of his inclusive policies for people of all faiths, and thus established religious harmony and coexistence of Hindus and Muslims in India. दीवाने आग में तशरीफ ला रही हैं। जितना कहे हम उतना कम है, तहजीबों का जो संगम है।
after another, India evolved with invasions leaving a lasting cultural impact on the society. After the Mughals, the Europeans arrived. In 1757, the British East India Company began trading in India, but gradually spread and took full control of the country. A century later, the first rebellion against the British rule occurred, leading to many organized movements thereafter. During the final years before independence, Mahatma Gandhi and Netaji Subhash Chandra Bose emerged as key leaders with different approaches. While Gandhi advocated non-violence, leading large compelling movements against the British rule, Bose took the struggle abroad, forming the Indian National Army with Indian soldiers captured by the Japanese during World War II. The INA had a compelling influence on both the British government and Indian society, leading to fears that Indian soldiers in the British Army might turn against the British. The INA inspired both men and women, leading to the first women's contingent in an army of that era. माटी पुकारे तुझे देश पुकारे आजा रे अब आजा रे भूले हम राह हमें राह दिखा दे आजा रे राह दिखा दे ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे हो पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बना रे नफरत की आधी बहती रे वहशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे आजा रे बापू आजा रे ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए तू शेर हिंद आगे बढ़ मरने से फिर भी तू न डर उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जाओ कदम कदम बढ़ाए जाओ खुशी के गीत गाए जाओ ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जाओ चलो दिली पुकार के हमें निशान संभाल के लाख किले पे गाड़ के लहराए जा चलो दिली पुकार के हमें निशान संभाल
years of colonial subjugation and a long battle for freedom, the country gained independence in 1947. India established a constitution and adopted democracy, pursued planned economic development and industrialization, brought reforms in agriculture and economy. India prioritized education, producing the largest workforce of skilled professionals. It became a leader in information technology, with its companies making significant global contributions. India's space agency ISRO achieved milestones with its research and success of cost-effective space missions. The pharmaceutical industry thrived, supplying affordable medicines globally and becoming a hub for medical tourism. India also has positioned itself as a hub of spiritual growth, introducing yoga and meditation to the world. Homegrown defense research modernized its military, making India a nuclear power in 1974, while it continues to be a key player in South Asian peace and progress. Economically, it grew to the 5th largest in the world. India's growth story, with democracy and the highest diversified population in the world, reflects hard work, resilience, tolerance, and the binding force of unity amidst diversity, which positions the country as a global power today, while it continues to navigate across challenges and opportunities. हर दिन है सुनहरा, जिसका हर दिल में बसेरा, जिसका बस नाम है काफी, ऐसा बस देश है मेरा। हाँ, जिसकी मिट्टी को सलामी देता है उजला सवेरा, जिसका बस नाम है काफी, ऐसा बस देश है मेरा। खेतों से सरहद तक सब बोले एक बोल रे, मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती। आशाएं, 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 आशाएं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं, आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार, आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। कुछ करिए, नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बो दे, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए,
भाग पड़िए तू बेदरिए या मरिए चक दे इंडिया चक दे इंडिया चक दे इंडिया चक दे इंडिया। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत है मुझे, भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। Thank you, Sanskriti Group. It was an excellent